Hello everyone. I hope you all are good and solving lots of questions. Let us solve this one. So there are 3 points and they are located at the vertices of an equilateral triangle. हमारे पास एक equilateral triangle है जिसका side A given है, ठीक है? And there are 3 particles kept on its vertex, ठीक है? So these are the 3 particles. What else is given? They all start moving simultaneously, that is at the same time. Let's say at t equal to 0, they start moving with velocity v constant in modulus, so they are moving with constant speed, with the first point heading continuously for the second, second for the third and third for the first. कहने का मतलब ये है कि first का velocity will be always towards 2 no matter how much time has passed. 2 ka velocity will be always towards 3, again no matter at what time you take the snapshot of this motion, and 3 will be pointed towards 1. So ye ek fact hai which will which will get followed no matter how much time has passed. Okay, now how soon will the points converge? It is getting asked when they will meet. All these 3 points will meet when, or maybe when 1 and 2 is meeting, also 2 and 3 are meeting, and 3 and 1 are meeting. So overall we can say 1 to 3 will meet at the same time, but we will explore it. Is it true or not? Before proceeding with this question, I will love to take you through a very simple example. Done hai. Let's say we are just having 2 particles, particle 1 and particle 2. Simplest question that you can get from this convergence problem. So simplest question ऐसा हो सकता है कि 1 and 2 have velocity directed towards each other. So let's say at t equal to 0, 1 has velocity towards 2 and 2 has velocity towards 1, like this. So their whole velocity is towards each other. There is no other component of velocity in other direction. It is like this. That is why I'm calling it the simplest case. And let's say t equal to 0, they are separated by distance L naught. Done है? Now what will happen over time? अगर over time आपको बताना है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम this will first particle will move forward, so it will reach here, then 2 will also reach here somewhere, 2 1 here, here. So if you take the snapshot of their motion at any time, you will find like they are what? They are along this line only, है ना? They are along this line and somewhere here they are meeting. Done it? And if you have to calculate the time when they will meet each other, so अगर यहाँ पे आपको mathematical equation लिखना है, you will say that since this separation is decreasing and this separation will decrease with what rate? This is separation between what? 1 and 2. So this separation will decrease at the rate of relative velocity of 1 with respect to 2 or 2 with respect to 1, right? So if you here go on to write at any instant, let's say 1 and 2 are at a separation of L. L is any variable. So minus dl by dt, that is rate of change of separation. Negative sign I have given because separation is decreasing, will be equal to velocity of 1 with respect to 2. That I can write, or 2 to 1, whatever you say. So this one you can write and from here you can solve. डन है, क्योंकि अगर यहाँ से आप सॉल्व करते हो, माइनस डी एल इज इक्वल टू v12 dt. Again v12 will be a constant here. So if they are meeting at time t, dl will vary from initial separation is L naught, final 0 if they are converging at a point, if they are meeting. So you will say here, here it will become how much? L naught is equal to v12 time. Done it? So time kitna hua? L naught by v12. This is the simplest thing. But what if they have velocity like this? And one has velocity like this, and this has velocity like this. Or if things are like कि there are more than 2 particles, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. So let's explore this question. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे we are given 3 particles, right? And those 3 particles are on the vertex of equilateral triangle such that they are always pointed towards each other. Done it? So this is the snapshot of their position at time t equal to 0. इनके पोजीशन का स्नैपशॉट क्या है? टाइम t इक्वल टू 0 पे आप यहाँ से लिख डालो इसको. So this is position of 1, this is position of 2, this is position of 3. So this is the snapshot. अगर t equal to 0 पे आप पिक्चर क्लिक करते हो, you will see that 1 is here, 2 is here, 3 is here, and if you combine their positions to get position vectors of all these points with respect to each other, then you will get one equilateral triangle, right?
डन है, सच दैट 1 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2, 2 टुवर्ड्स 3, 3 टुवर्ड्स 1। अगर कोई भी डिफरेंट टाइम पे आप स्नैपशॉट निकालना चाहते हो, सपोज कर लो 1 सेकेंड पे या 0.001 सेकेंड पे, 1 हैज मूव्ड, राइट, 2 हैज मूव्ड, 3 हैज मूव्ड, बट मूव्ड इन सच अ वे दैट दे आर स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और ये कब पॉसिबल है? लेट्स एक्सप्लोर दैट। सपोज कर लो सबसे पहले ही मैं इसके फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल की बात करती हूँ। तो देखो फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल कैसा था, यहाँ पे फर्स्ट था, इट वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2, एंड यहाँ पे सेकेंड था, इट वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3। डन है। सो इफ वी जस्ट टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट एंड टू, done hai, then we can see that how their trajectory is going to change. One has always point towards 2 and 2 towards 3. It is only possible if this difference, I mean this length which was initially a, will decrease in such a way that it is still the side of one equilateral triangle, right? क्योंकि यहाँ पे अगेन देखो 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आया, so 3 must be somewhere here, such that if you are taking the snapshot, if you are again taking the snapshot, then you will find that 1 is here, 2 is here, 3 is here, and again when you are combining, you will be getting what? You will be getting one equilateral triangle, and this equilateral triangle has a side less than that of A. And gradually, I mean, again, if you take the snapshot, you will find that 1 is here, 2 is here, 3 is here. Again, if you combine them, you will be getting again an equilateral triangle. So like that, they will move. Done it? And why they are moving in this way? Because they have to always point towards each other. And this is only possible if they maintain the geometry. अगर geometry distort हुआ ना, they won't be any longer pointing towards each other. And that is why it is important. जैसे 1 2 देखो कैसे proceed कर रहा है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा. If you take 1 2 3 in single frame, then देखो 1 2 3 at equal to 0. उनका स्नैपशॉट कैसा है, आई मीन देयर पोजिशंस आर लाइक दिस. इफ यू कंबाइन देयर पोजिशंस बाय लाइन, यू विल गेट वन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगेन देयर पोजिशन है चेंज, सो अभी आपको दिख रहा है ये पोजिशन है ये. अगेन व्हेन यू आर कंबाइनिंग, यू आर गेटिंग वन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगेन इट इज दिस, राइट. अभी पोजीशन क्या हो गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया. अगेन इफ यू सी, तो ये एक दूसरे के करीब चलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना. अब आप देखो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे. डन है. और पास आया, और ये कितना पास कहाँ पे जाकर मिलेगा, क्या लग रहा है आपको, कहाँ मिलेगा बताओ. ये ट्रायंगल और छोटा होगा, राइट. ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और ये फाइनली एक सेंटर, एक पॉइंट हो जाएगा, राइट. सो दैट विल बिकम अ डॉट, एंड एट दिस डॉट ऑल दिस 3 पार्टिकल्स विल मीट. सो यहाँ पे ये तीनों ऐसे आ जाएंगे. एंड दिस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकली इफ यू सी, दिस विल बी द सेंट्रोइड. ठीक है. बिकॉज मीटिंग पॉइंट, कन्वर्जेंस पॉइंट, ऑल दिस पार्टिकल्स seem like they are approaching with the same speed, right? So this has to be centroid from the symmetry, from the geometry you can see. So this is the point where these 3 particles will converge. अगर आप geometrically appreciate कर पा रहे हो ना, जैसे देखो यहाँ पे जो particle 1 है उसका मोशन आप कैसे दिखाओगे, उसका मोशन कुछ ऐसे गया है, ऐसे. ठीक है. अगर आप इसके मोशन को दिखाओ तो कुछ ऐसे दिखाओगे, राइट. अगर आप थर्ड के मोशन को दिखाओ तो कुछ ऐसे दिखाओगे. अगर सही से ड्रॉ करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा. डन है. सो दे आर मूविंग नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग ऑन अ कर्व्ड लाइन. एंड दिस कर्व्ड लाइंस पे कोई भी एक डॉट लो, दैट डॉट विल टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल at particular instant of time. And if you, I mean if you take at time t equal to certain constant time, let's say 1 second, if you locate the position of particle 1 on this line, we are getting 3 line, right? So this is second line, let's say, and this is your third line, this is first line. So if you take I mean if you locate the position at 1 second on 2 lines, so that will tell you what, that will tell you the position of second particle. फर्स्ट लाइन पे अगर आप करते हो तो फर्स्ट पार्टिकल, और थर्ड लाइन पे करते हो तो थर्ड पार्टिकल का पोजीशन. एंड इफ यू कंबाइन देम, यू विल बी अगेन गेटिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड ज्योमेट्री, वर्क इज ओवर. वी नाउ जस्ट नीड टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन दे विल मीट. टाइम निकालने के लिए यू कैन डू, आई मीन यू कैन टेक एनी 2 पार्टिकल. सपोज कर लो मैंने इस पार्टिकल को लिया, किसको ले लूं, 1 2 को ले लेते. ठीक है. सो इफ 1 2 आर मीटिंग, आई मीन 1 2 कैसे मीट किया था, ये लाइन छोटा होता गया है, राइट. दिस वाज इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1, एंड व्हेन दे आर मीटिंग हियर,
this length equal to a initially has reduced to 0, right? So we just need to see what was the relative velocity of 1 towards 2, ठीक है, initially, ठीक है, and because that is not going to change because one has always to point towards 2, 2 towards 3, so angle change नहीं होगा, and also magnitude of their speed is constant, so relative velocity is going to be constant. डन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जैसा कोई केस है नहीं. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 टूवर्ड्स 2 कितना होगा बताओ. सो v12 अगर आप लिखते हो ना, 1 का वेलोसिटी v था, 2 का इधर की तरफ है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ कितना होगा, दिस इज 60, so this is v cos 60. So if you calculate relative velocity, v minus v cos 60, why minus, because अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, this direction I need to take as negative, right? So this will give us v plus v by 2, and that is 3v by 2. So this is the magnitude of relative velocity of 1 along 2 towards 2, right? So 1 with respect to 2, that is what I have done. अब देखो, अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो what you will write, जैसे कोई भी एक जनरल टाइम पे आप ले लो, सपोज कर लो 1 तुम्हारा यहाँ था और 2 तुम्हारा कहाँ है, 2 तुम्हारा यहाँ है. सो इस जनरल टाइम पे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन आप कुछ भी मान लो, सपोज कर लो L है, एंड दिस सेपरेशन इज डिक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट. व्हाई कांस्टेंट रेट? बिकॉज this velocity is constant, relative velocity, there is no acceleration, so we can say that rate of change of separation, that is relative velocity, is constant, 3v by 2. Why I have given negative sign again? Because here dl by dt is negative, and rate we are writing, rate always we write as positive, and to make it positive we have given negative sign because this is inherently negative. To make it positive you need to provide it with a negative sign. अब आप minus dl ऐसा लिख लो, 3v by 2 लिख लो dt, ठीक है. अब इसको आप सॉल्व कर लो, dl will vary from a to 0, finally it will become 0, so this will become a, and this is 3b by 2t. So t will be equal to how much? 2a by 3b. Such sort of question with this much symmetry, you can always solve for more number of particles also. Suppose कर लो तुम्हारे पास 6 particles हैं, and those 6 particles are kept on where, on kept of the vertices of hexagon, ठीक है. अगेन सिमेट्री लिया है मैंने, सारे साइड्स का, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, सारे साइड का लेंथ सेम लिया है मैंने. सो लेट्स से ये a है, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, and like that. There is particle 1 always headed towards 2, 2 towards 3, and 3 towards 4, and so on, ठीक है. So it is like this. अगर आपसे पूछता है कि where they will meet and at what time they will converge. So again the question is of convergence time or convergence point, right? So where they will converge, you can say कि they have, I mean question ये है कि one will always point towards 2 no matter how much time has passed until they meet. So geometry maintain होगा, geometry इसलिए maintain होगा कि अगर 1 2 की तरफ है, 2 3 की तरफ है, 3 4 4 5 5 6 6 1, and initially in order to maintain this sequence, to maintain this particular fact, they have to sit on the vertices of regular hexagon. Then for any later time also अगर ये चीज maintain करना है, they need to sit on vertices of regular hexagon. Only difference is their side will change. And why their side length will change? क्योंकि आप देख लो, a जो है 1 जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 1 का स्पीड 2 की तरफ कितना है u, और 2 का स्पीड 1 के लाइन के अलोंग, लाइन ऑफ मोशन के अलोंग कितना है, इधर की तरफ v है, इधर की तरफ है v cos 60. So it has v by 2 along this line and one has v along this line. So definitely one is going to catch 2. So this separation will keep on decreasing over the course of time. So ऐसा कुछ दिखेगा, है ना. अगर तुमने इनिशियली कुछ ऐसा ऐसा बनाया था, इनिशियली ऐसा था, तो टाइम एज टाइम विल वे बाय और टाइम विल गो ऑन, तुम्हारा ये सारे डॉट्स क्या होने वाले हैं, पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज होने वाला है, एंड फाइनली 6 पार्टिकल्स इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएंगे, मीट कर जाएंगे, ठीक है. सो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस. कितने टाइम में मिलेंगे, अगर आपको टाइम निकालना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तक निकाल चुके होंगे. सो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 1 and 2, कोई भी 2 पॉइंट के बीच निकाल लो, सेम ही होगा. सो डिस्टेंस इज a डिवाइडेड बाय टाइम आप लिख लो,
सॉरी वेलोसिटी लिख लो, कितना था v minus v by 2, so that is give you 2a by v. So this is the time after which they will converge at the center. ठीक है, उसी तरह से n साइड ऑफ पोलीगन है और उस पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे गए, अगेन रेगुलर पोलीगन दे आर, एंड देन टाइम यू कैन कैलकुलेट एज साइड ऑफ पोलीगन divided by speed of one particle, let's say v, minus how much v cos 2 pi by n. अब इस फॉर्मूला को जैसे यहाँ पे पुट करके देखो, यहाँ पे n क्या था 6, 6 साइड्स वर देयर, सो 2 pi by 6 तुम्हारा कितना हो गया, दैट इज पाई बाई 3. सो v cos pi by 3 was v by 2 and that is how you got the answer. Done it? So this is the general formula you can use for any number of sides. Okay, I hope you have got all the concept and I hope you got something to think on, something to imagine. And even if you feel like somewhere you couldn't understand, something you couldn't grasp, then you can always let me know in the comment section. Okay, chalo, everyone take care of yourself and keep on solving more number of questions. Thank you.